Good morning fourth class. I hope you all are doing well at your home. So fourth class हमने लास्ट क्लास में साइंस में चैप्टर नंबर 9 एयर वी ब्रीथ को हमने फिनिश करा था. आज मैं आपको वो चैप्टर डीजी पे एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला टॉपिक है एयर, अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. Probably the only planet in our solar system where life exists. This is because Earth has all the resources needed for life. Air and water, the two resources most essential for life, are present in abundance on Earth. Let's begin by learning. तो एक हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारे पास 9 प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट में सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ ऐसी है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ क्या चीज़ है? आपका एयर और वाटर, जो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है. Think about air. Air is everywhere around us. Air is invisible. It has no color. It has no odor. It has no taste. Yes, though it is invisible, it is present everywhere. It is there in the classroom. It is there in the playground. It is even present in this empty bottle. You must be wondering how air is everywhere when we cannot see it. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था वी कैन नॉट सी एयर, मतलब इनविजिबल. एयर हैज नो कलर, एयर का कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है. एयर हैज नो ऑर्डर, एयर की कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, वो ऑर्डरलेस है. एयर हैज टेस्ट, एयर हैज नो टेस्ट, एयर का कोई टेस्ट नहीं है, ना स्वीट ना बिटर ना सार. तो एयर क्या है? वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली फील इट. हम सिर्फ एयर को महसूस कर सकते हैं. हम ना तो उसको देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, और ना ही उसका कोई कलर है जिसको हम देख सके. Various things in our surroundings indicate the presence of air. For example, swaying trees, flying kites, fluttering pages. All these things move because the air around them is moving. Even without these apparent movements, we can feel the presence of air. Try blowing your breath against your palm. What you feel is air. Thus, air cannot be seen, but it can be felt when it moves. Now, let's observe what happens when air is blown into a balloon. The balloon grows in size to accommodate the air. This simple activity proves that air. हमने बलून के अंदर एयर को फिल करा, हमने बलून के अंदर एयर को फिल करा, तो बलून में एयर फिल होने के बाद बलून ने अपनी शेप ले ली, बलून के अंदर एयर ने अपनी शेप ले ली, तो एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस. एयर जहां पर भी जाती है अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है. Occupies space. More the air, the more space it occupies inside the balloon. Next, let's observe another simple experiment. Two air-filled balloons are tied at the end of the stick. The stick is balanced by shifting the position of the balloon. Now, observe what happens when one of the balloons is pricked with a pin. The balloon becomes smaller in size as the air escapes. What happens
let's perform an activity that will help us feel air. An empty plastic bag is filled with air by blowing into its open end. Why does the bag swell? मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि क्लास आप एक प्लास्टिक की पॉलिथीन लेना और उसके अंदर एयर फिल करना और फिर उसकी शेप देखना। वो प्लास्टिक का पॉलिथीन की जो शेप होगी एयर वही शेप लेके आपको शेप वो शो कर देगी। Air blown into the bag occupies space. Hence, the bag swells. Now, feel the bag from outside. Why does it feel like there is something inside? When one pushes from outside, air molecules present inside the bag press back against the inner surface of the bag. This enables us to feel air. All living organisms need air to support various life processes. All plants and animals need air for respiration. Plants also require air along with sunlight and water to make their own food. The process by which plants make their own food is called photosynthesis. क्लास जब मैंने आपको कुछ आपके लास्ट चैप्टर्स में पढ़ाया था कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड दिस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं? वाटर से, सनलाइट से और CO2 से। वाटर ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट ऊपर से लेते हैं और जो CO2 होती है इन तीनों से वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं और O2 को, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और ये O2 मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 का मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ठीक है क्लास? Air also protects living organisms on the earth from the heat and the harmful rays of the sun. It forms a protective layer around the earth, which is called atmosphere. Atmosphere extends nearly up to 600 kilometers above the Earth's surface. The atmosphere prevents the excessive heat and the harmful ultraviolet rays from the sun to reach the Earth's surface. Moving air, which is called wind, also has various uses in everyday life. The most widely used application of wind is a windmill. In the olden days, windmills were used for grinding grains and pumping water. Today, windmills are used to produce electricity. Wind also facilitates the sailing of ships, the flight of aeroplanes, helicopters, birds, and insects. The dispersal of seeds and pollen of flowers are also facilitated by wind. Okay class, देखो, air is colorless and invisible. Although air is invisible, its presence can be felt through the movement of objects like
जब हवा चलती है, जब एयर बहुत तेज होती है, एयर की स्पीड, तो आपके कॉपीज के पेपर ऑटोमेटिकली टर्न होने लगते हैं, तो हमें उसको किसी चीज के थ्रू रख के स्टॉप करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये आपकी एयर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। Most people think that the air they breathe is nothing but oxygen. However, this is not true. There is more to air than just oxygen. Let's understand the composition of air. Let's begin by observing a simple experiment. A lit candle is placed in a glass trough containing water. The candle is covered with a tall glass beaker. As you can see, some water enters into the glass beaker. The level of water present in the beaker is marked. After some time, the flame of the candle extinguishes. Observe that the level of water inside the glass beaker has gone up. Why did the candle extinguish and the water level rise? We know that burning can occur only in the presence of oxygen. This means that oxygen was present in the air inside the beaker. When all the oxygen is used up, the candle blows off. With the depletion of oxygen, empty space is created inside the beaker. As a result, water rises into the beaker to occupy this empty space. But you can see that water does not completely fill the beaker, as air still occupies some space. This means that in addition to oxygen, there are other components also present in air. The major bulk of air is made up of nitrogen. It also contains carbon dioxide and other gases like hydrogen, neon, and argon in small quantities. None of these gases support burning. Most people think that the air they breathe is nothing. ओके क्लास, अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस जो एयर में हमारे प्रेजेंट है। Let's begin by observing a simple experiment. A lit candle, oxygen, there are other components also present in air. The major bulk of air is made up of nitrogen. It also contains carbon dioxide and other gases like hydrogen, neon, and argon in small quantities. None of these gases support burning. This is evident by the fact
होगी, एयर में से जो ऑक्सीजन के थ्रू वो बर्निंग में हेल्प करता था, जब वो बंद होगी तो कैंडल आपकी क्या होगी, बुझ गई। क्या होगी आपकी, एक्सटिंग्विशेस हो गई, बुझ गई, मतलब उसका वो जलना खत्म हो गया और वो क्या हुई, ब्लो होना बंद हो गया। तो किसने हुआ कि कैंडल को भी जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। Air is a mixture of gases. It is composed of 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% carbon dioxide and other gases. The composition of air varies with altitude, from place to place and time to time. Let's discuss what component of air is likely to increase in each scenario. Nitrogen, oxygen, and carbon dioxide are all essential for the survival and growth of living organisms. Nitrogen provides plants with the energy to grow foliage and produce fruits and vegetables. It is a key component of protein. Hence, it is required to facilitate growth of all animals. However, nitrogen cannot be used directly by living organisms. It needs to be converted into nitrates. The conversion of nitrogen to nitrates is called nitrogen fixation. All living organisms require oxygen. ओके क्लास, तो आप लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पढ़ा हमने, और एयर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड टिल हेयर क्लास। थैंक यू क्लास।